Good morning, dear students. Welcome back in your computer class once again. In the last video, we have covered the topic identifiers and I gave you the homework also, that's the assessment C. Now, today we will recheck the answers and you just write it in the notebook. Okay, we will do the question answers only when we will complete the theoretical portion of this chapter, but before that you can complete your assessment C first in the notebook. Okay, so the first one is, question says, identify the valid and invalid identifiers from the following. Tick the correct for the valid identifier and put the cross sign for the invalid identifier. So read out the first question. It says underscore DS. So this is a valid identifier. Why it is valid? Because it contains the underscore and alphabet. So you will write the answer as valid and put a tick sign. Okay. Second question. Second is break. So break is a invalid identifier and you have to specify the reason also why it is invalid. क्यों है ये invalid break? Because, write the answer, because it is a, what it is? It is a keyword. Write the answer, because it is a keyword. Fine. Next, 64 CTIT. What it is? Valid or invalid? Invalid. Why? Write the answer for the third one. Invalid because it, यहाँ पे लिखोगे because it starts with a digit. Because it starts with a digit. This is the answer of third part. Next question, underscore CHK. What it is? Valid. Why it is valid? Because it contains the underscore and alphabet. So there is no issue. So no need to specify the reason for the valid one. Just only specify the reason for the invalid identifier. Next, APET question mark. This is invalid. Why? Because, write the answer, because it contains a special character, because it contains a special character question mark, and in the bracket write the name of the symbol, which is question mark. Bracket close. Fine. Sixth answer, my dash file. This is invalid because it contains a special symbol hyphen in between. My और file के बीच में क्या लगा हुआ है? We have a hyphen sign. So you will write invalid because, sorry, invalid के आगे first put a cross sign, because it contains a special character dash and bracket में write the name of the symbol, which is known as hyphen. HYPHEN hyphen. Next, sixth is A to Z. This is invalid. Why it is invalid? Because it contains the special symbol white space. What is white space? If we are having space in between, जैसे कि valid identifier जो example given है book में, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A to Z. Without any space it is written in the example in your book. ठीक है? But here in this question they have given the space. So that's why it is invalid. So you will write the answer invalid because it contains a special character, और फिर उसके आगे लिखोगे character का name white space. So complete the answer by yourself. Okay? Because it contains a special character white space. Next, eighth, my file. This is a valid identifier. Why it is valid? Because it contains all the letters.
So don't specify anything, just only write the answer as valid. So recheck your all the answers and give the marks to you that how many of you have attempted it correctly. So this one, do it in your copy. Now after this, identifier topic completed. Now next we have keywords. ठीक है. So keywords are what? These are the reserved words that convey some special meaning to the compiler. They cannot be used as the identifiers, that means the names of the variables, class or method. इसका मतलब keywords कुछ ऐसे words होते हैं which are fixed, or you can say which have a specific meaning, which are reserved. So actually the reserved words are known as the keywords, which cannot be used as the name of a identifier. जिसको हम identifier के name की तरह use नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? Keyword. Like example we have here, like abstract, boolean, break, case, char, class, default, if else, etc. So many keywords we are having actually in Java. So as you will learn the language, as you will learn this Java language, you will keep on getting the things. That means how do we identify the keywords. तो यहाँ पे कुछ basic keywords दिए हुए हैं आपके, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से keywords हैं. ठीक है. जैसे आपसे पूछा जाएगा, suppose you have case and question is given, identify that this case is valid identifier or invalid identifier and give the reason. तो आप क्या कहोगे? Case is a invalid identifier. Why it is invalid? Because it is a keyword, and keywords, as we know, keywords cannot be used as the identifier, that's why it is invalid. ठीक. एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लाइक कोई भी आपको अदर देन एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज में गिवन है ना, लाइक असेसमेंट सी में, अदर देन दैट ऑल्सो एनी एग्जाम्पल कैन कम रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स ऑल्सो. क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम बिकॉज सम इंटरनल क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज द टॉपिक कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स. व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? Constant means a data item which does not change its value during the execution of a program. Means constant कुछ ऐसी values होती हैं जो fix रहती हैं during the execution of the program. Now what do you mean by execution? Execution actually means when you run the program. That running process is actually known as execution. यानी कि जब आप अपना कोई प्रोग्राम लिखते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आप कंप्यूटर प्रोग्राम क्यों बनाते हो? जस्ट बिकॉज यू वांट सम सॉल्यूशन. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, लाइक इफ़ आई से यू कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स एंड गेट द रिजल्ट, तो आप क्या करोगे? आप 2 नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाओगे. ठीक है. दैट शुड वर्क ऑन ऑल द नंबर्स. मतलब आप कोई भी 2 नंबर दोगे रैंडम, इट शुड वर्क फॉर ऑल द नंबर्स. So when you will run the program, so obviously you get the answer also, you want the result also, like 2 plus 3, so answer will be 5. तो 5 आपको कहीं ना कहीं तो चाहिए होगा ना स्क्रीन पे. तो स्क्रीन पे जो आउटपुट है, स्क्रीन पे जो 5 होगा, वो कैसे आएगा? when you will execute your program. So when you will execute your program at that time, that means the execution is actually known as running the program. ठीक है. So that you can get the desired result on the computer screen. That process is known as execution. तो जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उस टाइम पे हम कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं जो कैसी होती है? कॉन्स्टेंट होती है, जो कि फिक्स्ड होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड दीज कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो नोन एज लिटरल्स. Now in your book given here 4 types of constant we have: integer constant, floating constant, character constant and string constant. Now one by one we will discuss. First is the integer constant. Integer constants are such kind of numbers, such kind of whole numbers that we can say without decimal point. ऐसे नंबर्स जो कि कैसे होते हैं? विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं आता. ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं. एंड दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी निगेटिव ऑल्सो. जैसे कि 200 इज इंटीजर नंबर, -213 is integer number, -4556 is integer number, 83965 is integer number. Yes. If I say 45.6, now is that the integer number? You will say no. Why?
Why it is not an integer constant? Because it contains the point, decimal point in between. That's why it's not an integer constant. ठीक है. Next comes with the floating point constant. Floating point constant का मतलब होता है ऐसे numbers, like such kind of numbers, it can be positive, it can be negative number, but which contain decimal point in between. ऐसे नंबर्स जिनके बीच में डेसिमल पॉइंट आता है वो हमारे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट. एग्जाम्पल 78.3, 95.679, -98.6, -12.50, then 8.9. All these are floating point numbers because it contains a decimal point in between. ठीक है, it may be positive or may be negative. Next comes to the character constant. Character constant कौन से होते हैं हमारे पास? Character का मतलब ऐसा कोई भी सिंगल सिंबल जो कि सिंगल क्यूट्स में इनक्लोज्ड हो. सिंगल क्यूट्स का मतलब ये जो ऊपर हम लगाते हैं ना कॉमा साइन, दिस इज नोन एज सिंगल क्यूट्स. और डबल क्यूट्स बनाना है तो ये, दिस इज नोन एज डबल क्यूट्स. तो any single symbol which is enclosed in single quote is known as a character constant. For example, A in single quotes is a character. If I write C, character constant. If I write H, character constant. Small h, character constant. सब क्या है? सिंगल, एक सिंगल सिंबल है और सिंगल क्योट्स में. If I write 1, now what is 1? 1 is an integer constant. होगा ना 1 integer constant, but if I will write 1 in single quote, so it will become character constant. Why? Because we are using single quotes, that's why it will become a character. If I write 12 in single quotes, so is that the character constant? You will say no. Why not? Because I told you one thing, the definition says only a single character or you can say only a single symbol should become. That means 12 नहीं आ सकता है क्योंकि 12 में हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं. That means 2 डिजिट्स आ रही हैं, एक 1 और एक 2. तो इसलिए 12 की वजह से ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हुआ. सो आई कैन ओनली यूज अ सिंगल नंबर और सिंगल कैरेक्टर इन दिस, लाइक दिस, then only it will be considered as a character constant. If I use plus in single quotes, it is a character constant. Next is string constant. String का मतलब होता है when we take the combination or the collection of the characters, then it is known as string constant. और string constant किस में आती है? डबल क्योट्स में. जैसे मैंने लिखा है this is a literal, तो डबल क्योट्स में, तो ये क्या बनेगा? string constant. If I say hello in double quotes, so this is a string constant. So remember, character constant always enclosed in single quotes and then string constant always enclosed in double quotes. तो अगर मैंने लिखा x in single quotes, तो ये क्या होगा हमारा? Right, character constant. And if I will write x in double quotes, so it will behave as string constant. Right? Now in the book, in your book, it is given as this कि आपका जो x है वो दिया हुआ है character constant which is given in, which is wrong in your book. So make the correction. x अगर double quotes में use करोगे, so it is not going to be a character constant, वो बन जाएगा string. तो अगर आपको character constant बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? In place of writing this, you have to write x in single quotes. Then only it will behave as a character constant. So I think we have covered, already covered, and I hope all these types of constants are clear to each and every one. Still, if you have any doubt, then you can put your queries in the comment section. I will answer it. Then moving on to the next, data types. Now data types, the definition says itself, data types means which defines the type of the data. टाइप ऑफ द डेटा मीन्स किस टाइप की वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं. मतलब जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स. अब वो 2 नंबर्स किस टाइप के होंगे? वो इंटीजर टाइप के होंगे या फिर फ्लोट टाइप के होंगे. सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इन आवर प्रोग्राम. सो उन वैल्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल्सो. नाउ कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. ठीक है.
फर्स्ट वन देखिए, इंटीजर. इंटीजर रिप्रेजेंट्स द होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट. ये तो हमें पता है इंटीजर नंबर्स कैसे होते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट. देन फॉर एग्जाम्पल 32 -12 476 1001. ओके. नेक्स्ट, कैरेक्टर कांस्टेंट. ये भी आपको पता है. कैरेक्टर कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल क्यूट्स. बताया है अभी, सिंगल क्यूट्स में होते हैं कैरेक्टर. अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. मीन्स आई कैन ऑल्सो इंक्लूड अल्फाबेट्स, आई कैन ऑल्सो टेक नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल दे हैव टेकन हेयर ए. सो ए इज अ कैरेक्टर. यस. 8 इन सिंगल क्यूट्स कैरेक्टर है. यस. एस्ट्रिक्स इन सिंगल क्यूट्स कैरेक्टर होगा. For sure, obviously yes. So this is the character constant here. Next is long. It represents the whole numbers without decimal point with range of this. It takes a memory space of 8 bytes. अब यहाँ पे देखो long और integer, अगर आप देखो ये जो definition है, this is exactly same as that of integers. किसकी तरह है? सेम, इंटीजर्स की तरह है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड लॉन्ग? अगर दोनों चीज़ें सेम है देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ लॉन्ग हेयर? सो द मेन डिफरेंस इज दैट लॉन्ग कैन टेक द लार्ज रेंज ऑफ नंबर्स वेयर एज इंटीजर कैन टेक द स्मॉल रेंज ऑफ नंबर्स. मतलब अगर किसी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो वो हो जाएंगे इंटीजर में, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं then I can take it into long. For example, if we have a number of around suppose 5 digits, 6 digits, 7 digits, I can take into integer like 3 6 9 4 5 1 something like this. 6 digits का number है तो किस में आ सकता है? इंटीजर में आ सकता है. But if I want to store the phone number of any student, तो फ़ोन नंबर जो है वो कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स, 12 डिजिट्स. नॉर्मली 10-12 डिजिट्स का होता है. तो दैट मच लार्ज नंबर, मतलब 12 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का जो नंबर होगा, दैट आई कैंट स्टोर इनटू इंटीजर टाइप. फॉर दैट पर्पस आई नीड लॉन्ग. तो अगर किसी का नंबर होगा लाइक 8 8 6 5 2 1 9 3 4 समथिंग लाइक दिस 0, so that is a very large number because in this number we are having so many digits, है ना. डिजिट्स ज़्यादा हैं तो अगर डिजिट्स ज़्यादा होंगी तो वो किस में जाएगा? लॉन्ग में. बट रिमेंबर वन थिंग, विदाउट डेसिमल पॉइंट इट विल कंटेन. ठीक है ना. नेक्स्ट हियर कम्स द फ्लोट. Float, it represents the numbers with the decimal point. You know it very well, like 10.6, 1000.0, -9283.758. All these are float numbers because it contains the decimal point. Read out the next, double. It represents the numbers with the decimal point. Now read out these two definitions. Both are same. अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो इनमें क्या डिफरेंस है? जो आपका इंटीजर लॉन्ग में डिफरेंस है, सेम डिफरेंसेस है. इफ़ वी हैव शॉर्ट रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर कम है तो किस में जाएंगी? फ्लोट में. एंड इफ़ वी हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर वी विल स्टोर इट इनटू डबल. यानी कि अगर कोई नंबर है अराउंड 7-8 डिजिट्स तक का तो जाएगा फ्लोट में, उससे बड़ा नंबर है तो किस में जाएगा? डबल में. बट हेयर इन योर बुक दे हैव टेकन द एग्जाम्पल सेम. जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल दे हैव टेकन हेयर ऑल्सो. ठीक है. बट यू कैन ऐड ऑन सम मोर एग्जाम्पल्स. लाइक फ्लोट के लिए दिस इज़ द बेटर वन, बट डबल के लिए आई कैन टेक अ लार्ज नंबर. लाइक आई कैन ऐड ऑन हेयर -85962.88731 something like this. So that's a very large number ना, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है इसमें, तो ये हम फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते तो किस में करेंगे? डबल में. ठीक है. सेम विद द लॉन्ग ऑल्सो. लॉन्ग में भी लॉन्ग और इंटीजर के एग्जाम्पल सेम ले हुए हैं तो आप ये सेम भी ले सकते हो, और यू कैन टेक द लार्ज नंबर ऑल्सो इनटू लॉन्ग, डजंट मैटर. Now one more thing which I want to tell you about the data types. Read out here, integer. It takes a memory space of 4 bytes. Now what is the meaning of this bytes? Bytes actually tells the total memory required by each data type. यानी कि एक वैल्यू, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, यानी कि जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो तो आइडेंटिफायर जो होता है दैट विल ऑक्यूपाई सम मेमोरी.
ऑब्वियसली जैसे अगर हम पेन ड्राइव की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, फ्लॉपी डिस्क की बात करें, सो ऑल आर हैविंग देयर कैपेसिटी टू स्टोर समथिंग, राइट? इफ आई वांट टू स्टोर सम डेटा इनटू द पेन ड्राइव, so I will say that this pen drive is of 1 GB, or it's of 32 GB, or it's of 10 MB, है ना? So what is this MB, GB? GB stands for gigabytes, MB stands for megabytes. तो बाइट का मतलब ये हमें बता रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कितना मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकता है. इन द सेम वे इंटीजर सेज दैट अगर कोई हमारा इंटीजर टाइप का नंबर है, सो आई नीड 4 बाइट्स. मतलब एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम कितनी बाइट्स आपको चाहिए? 4 बाइट्स चाहिए. So you have to learn this. How many bytes we need? 4 bytes. In the same way, character को store करने के लिए we need how many bytes? 2 bytes. Then next is long. Long के लिए कितना चाहिए होता है? 8 bytes. Float 4 bytes and double 8 bytes. Look at here last. So if you want to learn this thing, you can learn it like firstly write char. Question can come in the exam, okay? So char, then int, float, then long, and then double, right? So char take how many bytes? Char takes 2 bytes. Integer takes how many bytes? 4. Float 4. और लॉन्ग और डबल क्या करते हैं? दे स्टोर द लार्ज नंबर्स. तो अगर लार्ज नंबर होंगे तो मेमोरी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए. तो लॉन्ग टेक 8 bytes and double take 8 bytes. This is how you will learn it: char, int, float, long and double. So this is the hierarchy how you can learn the number of bytes required by each and every data type. Fine. So up to here I'm leaving it. In the next class we will cover up variables, output statements and operators. ठीक है? So that's all for today. Thank you.